of the state is possible only as first it resides in the hearts and souls of the citizens. तो ये एक कोटेशन है जो प्लेटो ने कहा है जस्टिस के बारे में। ये स्टेट में उसी वक्त पॉसिबल है जब जस्टिस का कॉन्सेप्ट, द वैल्यू ऑफ जस्टिस रिसाइड्स इन द हार्ट्स एंड सोल्स ऑफ द सिटीजन। जब सिटीजन्स के हार्ट्स एंड सोल्स में जस्टिस का कॉन्सेप्ट होगा, then only it is possible to conduct in the state। ये प्लेटो का एक कथन है, एक प्लेटो का कोटेशन है जो मैंने कोट किया। So once again this is Dr. MD Nazeer Hussain from the Department of Political Science, University of Science and Technology, Meghalaya, and I welcome all of you to this session. The theme of this session is Social Justice in India, Constitutional Perspective. So now, what will be the learning outcome of this session? This is very important because we all are from the educational fraternity. We are educators, we are teachers. So for every session, for every lecture, even the classroom lecture जो हम अपने स्टूडेंट से क्लासरूम में लेक्चर देते हैं, तो उसके पहले हमें एक लर्निंग आउटकम, इस लेक्चर के बाद हम क्या सीखेंगे, ये हमारा एक एजेंडा होना चाहिए। जब भी हम कोई लेक्चर देते हैं, आइदर इट इज फॉर द टीचर्स, फॉर द फैकल्टी मेंबर्स और फॉर आवर स्टूडेंट्स, तो हमारे माइंड में एक फ्रेम होना चाहिए जो हमें डिस्कस करना है अपने ऑडियंस के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ। हमें डिस्कस करना है कि इस लेक्चर का लर्निंग आउटकम क्या होगा। तो आई हैव मेंशन्ड सर्टेन लर्निंग आउटकम्स। आफ्टर गोइंग थ्रू दिस लेक्चर वी कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सोशल जस्टिस, स्पेशली इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, एंड वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड देन वी कैन एनालाइज हाउ सोशल जस्टिस इन्फॉर्म्स पॉलिसी, लॉ एंड एजुकेशन इन इंडिया। सोशल जस्टिस का जो वैल्यूज है वो हमारे इंडियन पॉलिसीज में कैसे है, इंडियन लॉज क्या कहता है उस पे, और इंडियन एजुकेशन सिस्टम में सोशल जस्टिस को कैसे इनकॉर्पोरेट किया गया है, ये हम we can analyze all these things after this lecture. And finally, one can explore how constitutional values such as social justice can be promoted, especially in academia. हमें as an educator, as a teacher, हमें ये भी देखना होगा after this lecture कि जो ये social justice का constitutional value है, इसको हम अपने क्लासरूम्स में, अपने स्टूडेंट्स में, अमंग द पीयर ग्रुप्स कैसे इसको प्रमोट कर सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द लर्निंग आउटकम ऑफ दिस लेक्चर, एंड आई होप आफ्टर दिस लेक्चर वी कैन लर्न समथिंग। This lecture can add something to your knowledge, to your existing information. So without further delaying, I will come to my first slide. Sorry. So in the first slide, just the introductory themes. When we talk about social justice, so the first thing, what comes to our mind when we talk about social justice? जब हम लोग सोशल जस्टिस पे बात करते हैं तो हमारे इंस्टेंटली हमारे दिमाग में क्या बात आती है? ऑब्वियसली बीइंग एन अवेयर सिटीजन, हम लोग टीचर्स हैं, एडुकेटर्स हैं, तो ऑफ कोर्स वी आर फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन्स. आई होप आई हैव सीन द list of participants. 251 participants are from different parts of the country, from different colleges and universities of the country. So of course we are from different disciplines. हम लोग का discipline different हो सकता है, but social justice एक common understanding है. ये हमारे day to day life में हम लोग use करते हैं इसको. तो जो first thing when we talk about social justice, जो first thing हमारे mind में आता है वो आता है equality, fairness, rights,
dignity, these are the terms which instantly comes to our mind when we talk about social justice. इसमें मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि इसमें जो हमारे लाइक कम पढ़े लिखे लोग हैं या जो इलिटरेट हैं उससे भी आप बात कीजिए कि आप सामाजिक न्याय की बात कीजिए. सोशल जस्टिस मीन्स सामाजिक न्याय. तो सोशल जस्टिस की जब बात होती है तो आप एक व्हेन यू टॉक टू इलिटरेट पर्सन, they can also tell you that what does it mean by social justice, सामाजिक न्याय. वो आपको फट से जवाब देंगे कि सोशल जस्टिस का मतलब है कि इक्वलिटी होना चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए, राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स की बात करेंगे वो, डिग्निफाइड लाइफ. So these are the terms that comes instantly to our mind when we talk about social justice. Now, the first thing that I want to discuss with you all, that what is social justice in a mere term. अगर आप किसी पढ़े लिखे या बिना पढ़े लिखे आदमी से भी बात करें तो वो आपको फट से बोलेंगे कि सोशल जस्टिस का मतलब होता है समानता होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए, डिग्निफाइड लाइफ होना चाहिए. बट दैट इज नॉट द academic definition of social justice. So the second point that I want to discuss, that what is social justice? Number of participants are very large, and for the technical reasons I cannot ask the question to the audience, to you, because lots of distractions will be there. So I have mentioned a very simple meaning and definition over here. What is social justice? You can see over the slide that fair and just distribution of resources, opportunities and privileges within society. जो resources are available in the society, opportunities are available in the societies, privileges are available in the society. So iska just distribution, fair distribution, that is somehow called as social justice. जो हमारे समाज में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो हमारे समाज में अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, इनका समानता से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. That is called as social justice. And the next point, which is also associated with social justice, it seeks to eliminate discriminations based on caste, class, gender, religion, reason or ability. There should not be any discrimination. भेदभाव नहीं होना चाहिए. Within the society, भेदभाव नहीं होना चाहिए based on आपका कास्ट क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपकी एबिलिटी क्या है. These should not be the basis of discrimination in the society. For what? For the distribution of resources, opportunities and privileges within the society. So this is somehow the common definition, common meaning, very simple. You can find very high level of academic definitions of social justice, but it is one of the very simple definition and meaning of social justice. And I hope you have got the idea, especially from other disciplines, then what does it mean by social justice. Now coming to my next slide. So we have to see the background, the history of social justice. So here, because we are discussing the Indian context, so I have given a comparison between Western versus Indian perspectives. So first of all, what we have to see, what is the Western view over social justice? What is the Western view? So in Western world, especially they focus over individual and rights. Their focus is over individual and rights. I'll give you one example that why they focus and how they focus over individual and rights. In Western world, see, in USA, in America, वहां पर एक provision है to protect the rights of children. They are very strict about the individual rights. So there is an emergency number 911. If any child gives a call over that number, अगर एक बच्चे ने उस पे कॉल कर दिया 911 पे, immediately police will come. They will first arrest their parents
उनके पेरेंट्स को अरेस्ट किया जाएगा, एंड नो डिस्कशन, नो डिबेट, नो आर्ग्यूमेंट, देन आफ्टर पुटिंग देम इनटू जेल, उनको जेल में रखने के बाद देन वो डिस्कशन एंड आर्गुमेंट स्टार्ट होगा. व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द कॉज, दे आर नॉट कंसर्न अबाउट इट. फर्स्ट दे अरेस्ट, पेरेंट्स को अरेस्ट कर लेते हैं, वो जेल में डाल देते हैं. देन नाउ यू सी what does this example explains over here. For them, duties, what are the duties of a child? For them it is not important. For them what is important? Rights, that the children rights must not be violated. That's why without making any investigation they used to arrest the parents, and later the legislative procedure will start. But this is their view, Western view. They focus on individual and rights. But when we talk about Indian view, Indian civilization, so since beginning, Indian civilization focus over dharma, varna, and later in post-independence era, the Ambedkarite vision of equality. That is our perception. So I'll give you certain explanation. कुछ इसको हम डिटेल में थोड़ा सा बताते हैं, because within time I have to finish. Within 1 hour I will try to conclude my entire lecture. So Indian context में since beginning what we see that we primarily focus over dharma, you can say duties. Instead of focusing over rights, we focus over duties. So I remember in the mythology of Mahabharata, I hope all of you know about Mahabharata, the story of Mahabharata. So I remember in Mahabharata, the guru of Arjun, Lord Krishna, he always reminded Arjun that you, being the king, try to fulfill your duties. Lord Krishna never remind him about the rights of kings, but he reminds his disciple Arjun about the duties of king. Why? Now there is a question that why Indian civilization focuses over dharma and duties instead of focusing over rights. See, we believe in Indian context, in Indian civilization, we believe that if you fulfill your duties, automatically your rights would be fulfilled. Means अगर आप अपना ड्यूटीज फुलफिल करेंगे तो आपके राइट्स ऑटोमेटिकली फुलफिल होंगे, बिकॉज वी आर अ सोशल एनिमल, वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी. So society में if everybody fulfills their duties, so automatically rights of everyone will be fulfilled. So I usually give one example in my classrooms to my students to explain that how if you fulfill your duties, if everybody fulfills their duties, automatically their rights would be fulfilled. How it happens? So I used to give a very simple example in my classroom lectures to my students. See, आपने कोई कार परचेज किया, you have purchased a car, you are the owner of that car, and you are eligible to drive it. You have the driving license, you have the RC, registration of that car, and every all other criteria you fulfill. So you have all the right to drive it because you are the owner of that car. But if you say that I will drive it rashly, जैसे मन होगा वैसे हम चलाएंगे इसको, that is not allowed. What you have to do? You have to fulfill the duties that you have to fulfill the traffic rules. There are certain traffic rules. So you have to fulfill that duties. What will happen? If everybody fulfills their duties to follow the traffic rules, automatically their rights would be fulfilled. Right to life, safety, and many other things. अगर समाज में हर आदमी ये ड्यूटी, ट्रैफिक रूल को फॉलो करने का ड्यूटी फुलफिल करते हैं, ऑटोमेटिकली सबके राइट्स फुलफिल हो जाएंगे. सो दैट इज व्हाई
in Indian context, we focus over dharma and duties, and later Ambedkarite vision of equality. So in that context, I have quoted Ambedkar over here, and I quote, Ambedkar says, justice is simply another name of liberty, equality, and fraternity. So we will discuss various other things related to Ambedkar vision of equality in the subsequent slides. Here, in the background, we also have to see pre and post-colonial India. What was the situation of social justice in pre and post-colonial India? So we are all aware there were lots of social inequalities in our society in pre and post-colonial India. Britishers जब हमारे यहाँ आए या उससे पहले जो हमारे देश की स्थिति थी, जो कंडीशन था, वो about social justice. So there were few factors in our society which was prevalent. बहुत जोर शोर से वो चीजें हमारे सोसाइटी में हुआ करती थी. One of the factor of social inequalities in our India, in pre and post colonial India, was caste system. Caste system was prevalent. Caste system means caste structure, caste based society. So I don't think to elaborate it further. We all know that there were 4 castes. Varna, I have mentioned the term Varna. Varna, like Brahman, Kshatriya, Vaishya, and Shudra. These were the 4 castes in our society, and accordingly they were treated. The caste system became an identity for them. As per the Vedas believe that caste system is not made for your identity, it is made based on your occupation. But later our society, like modified all these values of Vedas, and caste system became very dangerous to our society. It was associated with the identity of the people, and in that context, huge discrimination existed in our society based on caste system. So that was one of the important element of our society in pre and post colonial India, which incurred lots of social inequality. बहुत social inequalities होता था उसकी वजह से. And then patriarchy, which is one of the which is ingrained in our Indian society. Patriarchy means the dominance of male. Because of the dominance of male since ancient time, so like there was huge gender inequality, and many other associated factors were there. Gender inequality, they were not allowed to go to the schools. Women, they were not allowed to participate in political affairs. They were not allowed to any social activities. Lots of discriminations were there. And then finally marginalization. So based on various factors, there were huge marginalization, deprivation, and underprivileged conditions existed in our society. So this is the background of India in pre and post colonial period. But I would like to add over here, while we were discussing the background, so whatever factors of discriminations, either it is a caste system or patriarchy or marginalization, and many other factors are there. But when we see the contemporary India, I don't think, maybe your opinions might differ, but I don't think I can see that lots of factors are still available in contemporary India. Either it is discrimination based on caste, or the patriarchy, the dominance of male, or the deprivation of marginalized sections. So still it is happening. So now we will see that how our framers of the constitutions, they were well aware, उनको कितना vision था इन सब चीजों का, कि हमारे सोसाइटी में जो ये चीजें हो रही हैं, जो social injustice हो रहा है, इसको कैसे दूर किया जाए. That is like very important to mention over here, that our framer,
our freedom fighters, our leaders, they were well aware that what is happening in our society, and on the basis of their experiences, on the basis of their interrogation and investigation, they have framed the constitution in such a way that constitution empowers marginalized society, constitution completely abolish the caste system, constitution empowers the women and other marginalized section of the society. That we will see in the subsequent sections. Now, coming to Indian constitution. So I've given you the background that what was the situation of India during post and pre and post colonial India especially. So we were suffering a lot. I can give you further examples that how Britishers devastated our country, not only in social arena, in economic arena, as well as in political arena. They have devastated our country. One of the another important element of justice is also economic justice. So in case of economic justice, Britishers completely devastated our resources, natural resources, human resources, and other resources. They have completely devastated it. What were their basic agenda? To collect the benefits from the resources of India and to transfer it to British Empire. That was their basic agenda. So we all know that how for years and years they have completely utilized our resources, but that was not primarily for the development of Indians. उनका जो बेसिक एजेंडा था, उनका बेसिक एजेंडा टू स्ट्रेंथन द ब्रिटिश एम्पायर, इंपीरियल गवर्नमेंट, ब्रिटिश एम्पायर को मजबूत करना था. दैट्स व्हाई उन्होंने हमारे सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज को भी कंप्लीटली डिवास्ट किया. I will again mention one example over here because a plain lecture is very boring. So sometimes we have to give certain examples. I hope most of you have visited Red Fort in New Delhi, Lal Killa. Lal Killa, I hope सबने देखा होगा New Delhi में. So when I visited Lal Killa way back, some I think 10-12 years ago, so there is a Moti mosque inside Lal Killa. लाल किला के अंदर में एक मोती मॉस्क है जो मुगल एम्पायर औरंगजेब ने बनाया था. तो इनसाइड दैट मॉस्क, इफ यू हैव विजिटेड, अगर आपने देखा है, तो उस मॉस्क में जो वॉल्स हैं, उस वॉल्स का जो डेकोरेशन है, द डेकोरेशन ओवर दैट वॉल्स वाज मेड बाय डायमंड्स. डायमंड से डेकोरेट किया गया था उन वॉल्स को. बट ब्रिटिशर्स, व्हाट दे डिड, I have personally visited that mosque. That's why I'm telling you. What they did, Britishers ने जो वो diamonds था walls में as a decoration, they have encroached that diamonds from that decoration. वो diamonds को निकाल लिया उन्होंने during their colonial period. वो उन्होंने उन diamonds तक को निकाल लिया. Now you can imagine उनका what were their basic agenda. So even in economic justice, our country was completely devastated. Politically, we all know that British's policy was to completely suppress Indian governance system. They themselves considered superior and they considered Indian as inferiors. Very limited opportunities was given to Indians to participate in the governance of the country. Very limited opportunities were given. So even in political arena, political justice, we have been completely devastated. So here comes the drafting of our constitution after independence. I'll give you certain more points to elaborate the situation of India. See, newly independent country like India after Second World War. Many third world countries, बहुत सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जिनको इंडिपेंडेंस मिला, जो अब मतलब आजाद हुए. One of them was India also. तो
On the basis of all these situations, what the scholars concluded for the India immediately after independence, there were two biggest challenges. There were many other challenges, but for those countries who got independence after Second World War, there were two biggest challenges in front of all these countries, including India. One of the challenge was to establish the country as an independent country in international affairs. Because since years and years, they were considered colonial country. Colonial means slave. India जो है गुलाम country माना जाता था, and many other countries, those who got independence after Second World War. तो उनके सामने ये one of the biggest challenge to establish their sovereignty, independence. कि now we are free country, we are sovereign country now. ये एक biggest challenge था immediately after independence. And the second challenge was, one of the biggest challenge was nation building. I have given you all the background that in which situation India got the independence. In India को independence किस condition में मिला? Socially, economically and politically completely devastated by the colonial masters, Britishers. Now in those situations, nation building was one of the biggest challenge in front of countries like India. And beyond that, to ensure socio-economic rights of the citizens, the social and economic rights of the citizens, that was also very difficult for countries like India to ensure. How they can ensure in such a situation where completely resources have been devastated? Resources उनका बिल्कुल तबाह किया गया हुआ है, बर्बाद किया गया हुआ है. So in that situation, वो अपने citizens के लिए कैसे ये ensure करेंगे कि उनका social and economic rights protect होगा? Social and economic rights means, for example, right to work, right to education, right to housing, right to food, right to health. These comes under socio-economic rights. Ab now you can imagine in such a situation how difficult it was for India to ensure socio-economic rights for their citizens. So, drafter, our leaders, they were all aware about all this situation, and especially because of the historical suppression of marginalized sections of the society. So in the preamble of the Constitution itself, it mentions justice, social, economic and political as the cornerstone of our republic. ये एक value है, because of the situation. जो social injustice का एक पूरी history है, especially in Indian context. So now you can imagine how it was important for the drafter of the Constitution of India, especially under the leadership of Dr. Bhimrao Ambedkar. That's why जो preamble को हम लोग क्या मानते हैं? Preamble is the gist of our constitution, the soul of our constitution. Preamble जो है constitution का soul है. In that soul it has been mentioned that there should be justice. For what? Social, economic and political, for each and everyone. It is so important. ये preamble में आ गया. Now, further, there are various articles that has been included under fundamental rights. We know largely there are two categories of rights, or you can say human rights: negative and positive. These are the two broad categories of rights or human rights, negative and positive. So negative rights, which is also considered as fundamental rights. Negative rights are those categories of rights which cannot be taken away. जो आपसे नहीं लिया जा सकता है, कोई छीन नहीं सकता है आपका. That is the meaning of negative. It's not negative in sense. Negative means what we understand. हम लोग सारे ये negative है, इसका तो कोई value नहीं है. No. The sense of negative over here is
that cannot be taken away. आपसे कोई छीन नहीं सकता है. That is negative categories of rights. Even state can't take it away without a due procedure. In certain, rare circumstances, sometime state is bound to, curtail your fundamental rights, but with due process. So in normal circumstances, fundamental rights cannot be taken away. ये आपसे कोई छीन नहीं सकता है. Now you see, that is the importance of fundamental rights. Under that fundamental rights, there are certain articles which defines that how important is social justice. First of all, I have mentioned over here, many other articles are also there. You can find some certain other articles in different, literature. So you don't be confused. These are some of the key articles. So Article 14, it talks about equality before the law and equal protection of the law. Now you see how important it is. It talks about equality. Before the law, everyone is equal. There is no discrimination. Either you are illiterate or literate. No. Law is equal for all. In certain circumstances, certain privileges are given to, higher officials. For example, President of India and other legislator and executives in certain circumstances. But in normal circumstances, everyone is equal before the law. There is no discrimination. And the protection of law is available to each and everyone without any discrimination. So it defines the equality among the society. Now, Article 15. I've given you certain idea what is the importance of fundamental. It can't be taken away. ये कोई आपसे छीन नहीं सकता है. Article 15. It talks about prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth. In case of privileges, in case of benefits of the policies of the state, so there should not be any discrimination based on the ground of कि आपका religion क्या है, कि आपका race क्या है, caste क्या है, आपका gender क्या है, आप किस जगह से आते हैं. No, there should not be any discrimination based on all these grounds. Article 15 completely prohibits it. I'll tell you, reality might be different, but these are all the provisions given by Constitution. Now, Article 16, equality of opportunity in public employment. If you are eligible, because for any employment opportunity, there are certain criteria, uska eligibility criteria hota hai, uska many other criteria are there. If you fulfill all those criteria, agar aap un criteria ko fulfill karte hain, then you have equal opportunity. You can apply for it. Either you are from this religion, from that religion, from this caste, from that caste, from this place, from that. No, doesn't matter. If you fulfill those eligibility criteria, you can apply for it. You can get selected if you fulfill all those criteria and if you crack the exam. There should be equality of opportunity in public employment. Similarly, abolition of untouchability, Article 17. Article 17, untouchability, it was prevalent in pre and post-colonial India, and unfortunately in certain, regions of our country, it is still happening. So that is very unfortunate to us. After almost more than 70 years of independence, it is still going on. So, but Constitution has completely abolished it. In the name of caste, in the name of religion, in the name of occupation, there should not be the practice of touchability. Now, Article 21. So, Article 21 is the, one of the very important provision of Constitution of India. Although it talks about right to life and personal liberty, but right to life and personal liberty is not a mere text. It should not be read as a text. Entire Constitution, it is said about entire Constitution that Constitution must not be read as a text. इसको text के जैसा नहीं पढ़ना है. Constitution का एक soul होता है, एक heart होता है. So whenever you read any provision, it is not confined to those texts. उसका एक larger elaborations होता है.
So thanks to Judiciary of India, the Supreme Court of India, that Article 21 under the context of right to life has been expanded largely, and right to education. Now, after Right to Education Act 2004, which became, implementable after 2009. So India has adopted right to education as a fundamental rights. Earlier, it was under directive principle of state policy. So in the next slide, we'll come to the directive principle of state policy. There we will see that various provisions are there, which also talks about right to education. But then India has now adopted right to education as a fundamental rights, and it became 135th country. Before India, 134 country has already made right to education as a fundamental rights. Because you see, right to life, mere right to life. What is the meaning of life if you don't have enough and available opportunity of education? If you are illiterate for your whole life, what is the meaning of your life? Similarly, if you don't have enough shelter over your head, your life is not protected. What is the meaning of right to life? If you don't have enough opportunity for the health protection, what is the meaning of life? So this way, our judiciary, the Supreme Court of India, has expanded the meaning of right to life. That is why it is said that Constitution of India should not be read as a text. There is a soul, there is a mind, there is a heart of Constitution. That must be taken care, that must be taken into account. So this way, these are few of the key articles which talks about social justice under fundamental rights. Now, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जिस पे हम डिस्कस करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को. बट बिफोर दैट, you can see I have given one of the box over there writing interesting fact. Interesting fact में what I have written, fundamental rights are justiciable while DPSP are non-justiciable, but it forms the guiding principles for the governance of the state. Now, in the last slide, I have already given you the idea what does it mean by fundamental rights. Its nature is negative. It can't be taken away. It means that it is justiciable. If your fundamental rights are violated, you can go to the court. You can take the help of court. Another government machinery, they will help you to protect your fundamental rights. That's why it is considered as justiciable. ये justiciable है ये अगर ये violate होता है, fundamental rights अगर आपका violate होता है, तो आप कोर्ट की मदद ले सकते हैं, आप डिफरेंट जो गवर्नमेंट की मशीनरी है उसकी मदद ले सकते हैं आप, और वो आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे. ऑन द अदर हैंड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो पॉजिटिव राइट्स के अंडर में आता है, इसकी कैटेगरी जो है वो पॉजिटिव राइट्स की है. नाउ पॉजिटिव राइट्स क्या होता है? स्टेट जो अवेलेबल रिसोर्सेज है, एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, स्टेट विल ट्राई टू फुलफिल दोज राइट्स. ये पॉजिटिव राइट्स होता है. स्टेट के पास जितना रिसोर्सेज होगा, अकॉर्डिंगली वो आपके राइट्स को फुलफिल करेगा. ये डीपीएसपी है, पॉजिटिव राइट्स, एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉन जस्टिसिएबल. नॉन जस्टिसिएबल मीन्स अगर ये इमीडिएटली फुलफिल नहीं होता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू 2 एग्जाम्पल्स ओवर हियर टू मेक थिंग्स क्लियर. What is the difference between fundamental rights and DPSP, negative rights and positive rights? एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर देता हूँ. इलेक्शन होता है, जैसे आप सबने वोट कास्ट किया होगा, तो जब आप वोट कास्ट करने के लिए जाते हैं इलेक्शन में, वहां पर इफ एनीबडी स्टॉप्स यू टू कास्ट योर वोट, अगर कोई आपको रोकता है आपका वोट कास्ट करने के लिए, इमीडिएटली यू विल बी प्रोवाइडेड द प्रोटेक्शन ऑफ पुलिस, और आपको वोट कास्ट करने के लिए देगा. नाउ दिस इज द नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स. इमीडिएटली आपको प्रोटेक्शन मिलेगा. ऑन द अदर हैंड, द एग्जांपल फॉर एग्जांपल राइट टू वर्क, ये आता है डीपीएसपी के अंडर.
राइट टू वर्क। अगर आपको जॉब, यू आर लाइक समवन, हम अपने सोसाइटी में देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है, इवन वो डॉक्टरेट हैं, बट उनके पास जॉब नहीं है। तो अगर आपके पास जॉब नहीं है, आपको इमीडिएटली जॉब नहीं मिल रहा है, क्या आप कोर्ट को जा सकते हैं? क्या आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं कि मुझे क्यों नहीं जॉब मिल रहा है? नहीं कर सकते। दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस। आप बीपीएसपी के लिए, पॉजिटिव राइट्स के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। आपको इमीडिएटली प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, स्टेट प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। व्हाट इज प्रोविजन? स्टेट के पास जितना रिसोर्सेज होगा, एज पर रिसोर्सेज, वो धीरे धीरे आपको सिटीजन्स की राइट्स को फुलफिल करता रहेगा वो। दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नाउ some of the very important directive principle of state policy. But you see, directive principle of, it does not mean sometimes we get confused. Array directive fundamental rights are very important. Directive principles are not so important. No, no, it's a very confusing statement over here. Sometimes there was a big debate that fundamental rights are superior, DPSPs are inferior, complementary to fundamental rights. No, DPSPs, it is the responsibility of the state to frame policies. सर आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। Okay, just a minute, just a minute. फ्रेंड्स, ये नेटवर्क के इश्यूज हैं। आई होप द नेटवर्क इश्यू विल बी रिजॉल्व सून, and I am very happy that all the 205 participants are attentively, listening the lecture, which is on a very important theme. हम हमारे रिसोर्स पर्सन से ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि one of the important component of social justice is affirmative action. सबसे इम्पोर्टेंट सोशल जस्टिस का कंसेप्ट इंडिया में जो है, अफर्मेटिव एक्शन मींस रिजर्वेशंस ऑफ द मार्जिनलाइज्ड पीपल, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओबीसीज, वुमेन का रिजर्वेशन इन असेंबलीज एंड पार्लियामेंट विल टेक प्लेस मे बी इन फ्यूचर 2029 में हो सकता है। लेकिन पंचायत और अर्बन गवर्नमेंट्स, कॉरपोरेशंस, म्यूनिसिपैलिटीज में ऑलरेडी हमने 73rd 74th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जरिए अफर्मेटिव एक्शन फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। जो मार्जिनलाइज थे, जो डिस्क्रिमिनेटेड थे, जिनको कोई नहीं पूछता था, उनका एम्पावरमेंट हमने कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए किया। अफर्मेटिव एक्शन, अफर्मेटिव एक्शन मींस प्रेफरेंशियल पॉलिसीज। इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आल्सो यू हैव टुवर्ड्स ब्लैक्स एंड हिस्पानियंस, जो नीग्रोज कहते हैं, जो ब्लैक अमेरिकन हैं, उनके लिए अफर्मेटिव एक्शन, एडमिशन यूनिवर्सिटीज में उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व करना, स्कॉलरशिप्स रिजर्व करना, और जॉब में प्रेफरेंस देना। सम गिविंग 5 पॉइंट्स, थोड़ा उनका कम परसेंटेज हो तब भी उनको लिया जा सकता है। अफर्मेटिव एक्शन, जिसको हम रिजर्वेशन पॉलिसी कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है सोशल जस्टिस का। हो सकता है आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू। he will be continuing his lecture. Yeah. Just a minute, I share my slides.
I hope it is visible to all of you again. Yes, yes. Okay. Visible. Okay. Okay. Sorry for the interruption. सुनाई सुनाई आवाज आ रही है. Okay. Okay. Thank you. So, now, like those important directive principles of state policy, which has been incorporated in Indian Constitution, जो हमारे Indian Constitution में कुछ important policies incorporate किए गए हैं DPSPs में as a positive rights. उसमें सबसे पहले the first one that I have mentioned, आपको बहुत सारे और भी provisions मिलेंगे जो related हैं social justice से. But these are some of the important, like mandates. It creates that important mandates. So Article 38, first of all, I have mentioned over here, Article 38. So it promotes the welfare of the people by securing and protecting a social order. So आप सब please अपने आप को mute कर लीजिए, किसी का mic on है, you please mute yourself. Okay, so Article 31 जो general social order है for the welfare of the people by establishing justice in all the fields, social, economic and political, in all the fields, how justice would be established, an ideal social order, कैसे उसको protect किया जाता है, ये welfare of the people के बारे में ये बताता है Article 38, and it is the responsibility of the state. ये स्टेट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है. आई वॉज टेलिंग यू दैट देयर वर लॉट्स ऑफ डिबेट दैट फंडामेंटल राइट्स आर सुपीरियर, DPSPs आर inferior. No, this is not the case. Fundamental rights, you see, that is immediately protected, but DPSPs as per the availability of the resources, but it is the responsibility of the state. ये state का responsibility है. State can't say that we are not concerned about all these things. नहीं, state ऐसा नहीं कह सकता है. स्टेट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बट एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज. दैट्स व्हाई हम लोग लाइक एजुकेशनल फ्रेटर्निटी से है, तो हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे डिपार्टमेंट्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में वैकेंसीज आती है, तो गवर्नमेंट उसको एडवर्टाइजमेंट करता है. फिर अगेन कुछ साल के बाद फिर वैकेंसी आएगी, तो फिर उसको एडवर्टाइजमेंट करता है. मतलब ग्रेजुअली अपॉर्चुनिटीज आर बीइंग प्रोवाइडेड, वो आपको gradually opportunities available karayega as per the availability of the resources. So that is also equally important. DPSPs are equally important. So ultimately that perception that fundamental rights and DPSPs runs together, ये perception है, ये it collaborates each other, ये एक दूसरे के साथ काम करता है, ये perception है. जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अभी हमारा परसेप्शन है वो ये है कि फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs कोलैबोरेट करता है एक दूसरे को, इट रन्स टुगेदर. ठीक है. तो नाउ आर्टिकल 38 आई हैव ऑलरेडी डिस्कस. 39 हाउ टू प्रमोट दैट सोशल जस्टिस. सो एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, एक्सेट्रा. ये जो इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट कि आपको adequate means of livelihood so that you can survive. आपको एक livelihood का opportunity दिया जाएगा कि आप कुछ earn कर सके अपने लिए, अपने family के लिए. Then fair distribution of resources, जो हमारे पास natural resources है, state resources है, इसका fair distribution among the people. And then see equal pay for equal work, gender equality. There should not be discrimination based on gender at workplace. जो काम है, अगर the amount of work is equal, then amount of payment must be equal. उतना ही मिलना चाहिए. But we usually what we see, especially in unorganized sector, still it is happening at large. आप जाके देखिए, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जाइए, वहां पर देखिए, what is the situation? Very vulnerable situations are there. जो women workers हैं, women laborers हैं, उसको कितना पैसा दिया जाता है? जो एक although it's legally wrong child labor, लेकिन it's very prevalent everywhere. वो एक child labor को कितना पैसा दिया जाता है? Although it is wrong, but ये हो रहा है हमारे यहाँ. But देखिए कितना पैसा दिया जा रहा है. आप जाइए, when you go to कहीं पे आप रिपेयरिंग शॉप पे जाइए, कहीं पे आप टी स्टॉल पे जाइए, एवरीवेयर एक छोटू मिल जाएगा आपको. उसको कितना पैसा दिया जा रहा है? तो दैट इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट to make provisions for equal pay for equal works.
So that is Article 39. Article 41, right to work, education, and public assistance in times of need. ठीक है? तो ये it is also the responsibility of the state to provide you ample opportunity of right to work. Now you see, as far as social justice is concerned, so what we see, आप सबने सुना होगा जो हमारा MG नरेगा है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये स्पेशली सोशल जस्टिस के अंडर इसको प्रोवाइड किया गया है फॉर द लेबरर फ्रॉम फॉर द पीपल फ्रॉम रिमोट लोकेशंस, जो बिल्कुल गांव के अंदर में रह रहे हैं, विलेजेस में रह रहे हैं, नो रिसोर्सेज, दे डोंट हैव एनी रिसोर्सेज. तो एटलीस्ट गवर्नमेंट ने ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया, 100 days ऑफ वॉक्स, 100 days ऑफ पेड वॉक्स, उनको पे किया जाता है उस वॉक्स के लिए. Although we all know what is the reality, what is the real situation, but still under right to work, to promote social justice, ये नरेगा जो MG नरेगा की स्कीम है for villagers, for remote locations, 100 days of paid work. Similarly, in times of assistance, sickness, like natural calamities, unemployment, and various other factors are there. जब आपको जरूरत है, you are in need of some assistance, जिसको कहते हैं सोशल सिक्योरिटी. सोशल सिक्योरिटी की प्रोविजन है हमारे यहाँ. इन योर like old age pension nowadays, अभी देखिए गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस various schemes, old age pension. Similarly, for women, certain pension is given separately. So इस तरीके से these are all the provisions of social justice under Article 41. Now, Article 46, it promotes educational and economic interest of the weaker section of the society, particularly SCs and STs. See, हमने जो देखा है ब्रिटिश पीरियड से ही या उससे पहले से भी, जो हमारा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमारी जो स्थिति है, हमारा जो कंडीशन है, लिटरेसी रेट, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट challenge for Indian for our nation, for India. Literacy rate, since beginning our literacy rate is very low. Still today the overall literacy rate is around 70-74%. Now imagine what I calculate, मेरा जो calculation है, I hope you will agree with me. If our 25% or more than 25-28%, something like this, if our 25% population is illiterate, what does it mean? ये 25% population जो हमारा है, जो इंडिया का है, it is bigger than the entire population of many countries. ये बहुत सारे कंट्री के कंप्लीट पॉपुलेशन से भी बड़ा है हमारा ये 25% पॉपुलेशन. इन दैट वे अभी हमको इस पे एनालिसिस करना है. अगर हम कह रहे हैं कि हमारा 25-28% पॉपुलेशन स्टिल इलिटरेट, तो वो 25% इज मोर देन 35 करोड़. नाउ इमेजिन, बहुत सारे कंट्री का इतना पॉपुलेशन नहीं है. सो how to promote the weaker section of the society, particularly scheduled caste and scheduled tribes, weaker section of the society. So government has made lots of provisions. Now, these are the constitutional provision. I'll come to, I have to stick to my time also. So I'll come to my next slide. See how like these are implemented. What are the constitutional implications? जो हमारे ये provisions है, इन provisions को कैसे practically implement किया गया? For that, in this slide, you can see constitutional implications, social and economic justice ensured through constitutional provisions. Now you see, and I hope when I was disrupted, तो sir कुछ आपको reservation policy के बारे में बता रहे थे. तो you see now Article 15 and 16, under Article 15-16, 15-4, 16-4, something like this. उसमें एक reservation की policy लाई गई for the weaker section of the society, because historically they are suppressed socially, economically, politically, educationally, in all the sectors. They are suppressed historically. Now reservation policy लाई गई. Why? So that they should also come up with the mainstream. That is the basic purpose of reservation policy. उनको कुछ reservation दिया जाएगा, कुछ quota दिया जाएगा, especially in educational institutions and public employment. एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में उनको कुछ कोटा दिया जाएगा. जो हिस्टोरिकली सप्रेस्ड हैं,
एजुकेशन से वंचित हैं, सोशली पूरा वंचित हैं, वो पॉलिटिकली कमजोर हैं, वो इकोनॉमिकली नॉन डोमिनेंट हैं, तो कैसे वो मेन स्ट्रीम में आएंगे? जो एक लाइक एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है, उस स्टैंडर्ड पे कैसे आएंगे? तो गवर्नमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 15 एंड 16 कुछ रिजर्वेशन की पॉलिसी लाई, जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज है, मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज है, उनको मेन स्ट्रीम में लाना है। सिमिलरली लैंड रिफॉर्म्स, जो ब्रिटिश पीरियड में ड्यूरिंग दोज पीरियड्स एक मीडिएटेड होते थे, जो एक तो हमारे कल्टीवेटर्स होते थे, जो लेबरर्स जिनको वर्कर कह लीजिए आप, और एक मीडिएटर्स होते थे जैसे लैंडलॉर्ड्स कहा जाता था, जमींदार थे, इस टाइप के लोग होते थे बिटवीन गवर्नमेंट एंड कल्टीवेटर्स। तो ये जो इंटरमीडियरीज होते थे, ये मैक्सिमम दे आर टेकिंग द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अंडर आर्टिकल 31 एंड सम अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लैंड रिफॉर्म्स लॉज बनाया। दे शुड नॉट बी एनी इंटरमीडियरीज, इंटरमीडियरीज नहीं होना चाहिए। ये जमींदार, ये जागीरदार, ये लैंडलॉर्ड्स जो मैक्सिमम बेनिफिट्स ले रहे थे, जो कल्टीवेटर्स, हमारे जो फार्मर्स है, जो किसान है हमारे, उनको बेनिफिट्स नहीं मिल रहा था। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये प्रोविजन लाया, लैंड रिफॉर्म्स का प्रोविजन, दैट लैंड शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड दे शुड नॉट बी इंटरमीडियरीज। सिमिलरली, क्विकली आई हैव टू कंप्लीट, लेबर रिफॉर्म्स का लॉज आया बहुत सारा, इंक्लूडिंग सोशल सिक्योरिटी, जो उनको अभी लास्ट स्लाइड्स में हमने डिस्कस किया, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, राइट टू वर्क, एंड लाइक proper condition of working conditions अच्छा होना चाहिए. So these are all the reforms that has been incorporated in constitution under various articles, article 14, article 15, article 16, article 38, article 30, many articles are there under which lots of labor reforms, especially for our workers, including social security. And then many rights-based initiatives, lots of rights who are incorporated in the Indian scenario to promote social justice. I hope आप सबने सुना होगा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, RIT, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005. तो ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ये अंडर आर्टिकल 19 आया है, जिसमें आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू सीक इंफॉर्मेशन है, ये आपका राइट्स है. So under that article, Constitution has further, brought that provision of Right to Information Act. Now, under the government offices, how it works? What is the status of your application? If you have applied for something, where is the application? So, आप Right to Information Act के through ये जान सकते हैं. तो it brought transparency. Right to Information Act is basically for to brought transparency. Transparency आएगा हमारे जो institutions है उसमें, and ultimately it will promote the social justice, of course. Now, one of the second rights-based initiative, Right to Education Act. So I have already discussed, but now you know that India made right to education as a fundamental rights. That provision is free and compulsory education for all अंडर द एज ऑफ 6 to 14, जो एलिमेंट्री एजुकेशन होता है उसके लिए एजुकेशन मस्ट बी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का प्रोविजन है हमारे यहाँ, विच प्रोमोट्स सोशल जस्टिस स्पेशली फॉर द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. सिमिलरली जो एक और हमारा प्रोविजन है राइट्स बेस्ड इनिशिएटिव, राइट टू फूड एक्ट, ये 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, आई होप आप सबको मालूम होगा, प्रणब मुखर्जी के टाइम में ये एक्ट बना. राइट टू फूड एक्ट भी फेमसली इसको जाना जाता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. सो दीज आर लाइक समथिंग विच इज बेस्ड ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. साइड बाय साइड हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ अमेंडमेंट्स जो हुए हैं विच इज स्पेशली रिलेटेड टू सोशल जस्टिस का प्रोविजन से. उस अमेंडमेंट में हम देख सकते हैं 42nd अमेंडमेंट 1976. इसमें आप देखिए कि जो सोशल एंड सेक्युलर टर्म्स है प्रियम्बल में, ये इनकॉर्पोरेट किया गया. Lots of debates are going on, वो होता रहता है, but what is our real status? That preamble में social and socialist and secular terms जो है वो add किया गया 42nd amendment में 1976. Similarly 93rd amendment 2005, 93rd amendment Act 2005 में जो marginalized sections है, especially scheduled castes, scheduled tribes, OBCs,
इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाया गया, इंक्लूडिंग नाउ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी SC, STs एंड OBCs का सीट्स रिजर्व होता है फॉर एडमिशन। सिमिलरली what we can see in recent time 2019 में 103rd amendment, I hope all of you are aware, EWS category, economically weaker section from the general category, because देखिए जनरल कैटेगरीज में भी बहुत सारी फैमिलीज ऐसी है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, सॉरी उनको लाइक इकोनॉमिकली दे आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग। जो जनरल कैटेगरी है उनमें भी बहुत सारे फैमिलीज ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे, दे आर इकोनॉमिकली नॉट सो स्ट्रॉन्ग। तो 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 ने उनके लिए 10% रिजर्वेशन लाया। बट एज आई टोल्ड यू कि हर जगह पे जो रियलिटी होती है वो डिफरेंट होती है। तो आई विल शेयर यू एन एग्जांपल ओवर हियर व्हाट इज द स्टेटस ऑफ EWS। जो EWS की कैटेगरी बनाई गई, वन ऑफ माय प्रोफेसर फ्रॉम वन ऑफ द रिनाउंड इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यू दिल्ली, हम नाम नहीं लेंगे, तो उन्होंने मुझे एक बार जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो उन्होंने मुझे बोला, अरे तुम क्या कर रहे हो, ये EWS कैटेगरी का तुम सर्टिफिकेट बना लो, यहाँ तो हमारे इंस्टीट्यूट में सब लोग EWS का सर्टिफिकेट फ्रॉम जनरल कैटेगरी, दे आर वेल ऑफ, रिच फैमिली से हैं वो, तो वो EWS का सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं। बट the agenda, why what is the provision of EWS? Because many families, बहुत सारे लोग ऐसे हैं इवन जनरल कैटेगरी में जो कैपेबल नहीं है, उनको बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है बहुत सारा, फॉर देम ये 10% रिजर्वेशन लाया गया सो दैट दे कैन ऑल्सो कम अप विद द मेन स्ट्रीम। सिमिलरली जो 104th अमेंडमेंट एक्ट है, ये लोकसभा में जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स का सीट्स है उसको एक्सटेंड किया, उसको एबॉलिश नहीं किया, उसको एक्सटेंड किया है। एंड फाइनली 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023, अभी हमने सुना कि विमेन के लिए पार्लियामेंट में एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में 1/3 ऑफ द सीट्स को रिजर्व किया गया। रियलिटी हम सबको मालूम है, व्हाट इज द रियलिटी क्या है, बट एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात कर रहे हैं, तो 106 अमेंडमेंट एक्ट जो अभी 2023 में लागू किया गया है कि 1/3 ऑफ द सीट्स जो है वो विमेन के लिए पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्व किया गया है। सो दीज आर सम ऑफ द प्रोविजंस व्हिच केम आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनल interventions. Now I'm coming to one of the very prominent scholar, Nobel laureate in economics, although he is an Indian origin, वो Indian origin के हैं, अमर्त्य सेन, आप सब ने नाम सुना होगा, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, हमारे वेस्ट बंगाल से हैं ओरिजिनली, बट वो यूनाइटेड किंगडम में UK में रहते हैं, तो उनको नोबेल प्राइज दिया गया है उनको इकोनॉमिक्स में। उनका क्या परसेप्शन है ये जस्टिस एंड फ्रीडम को लेकर के, उनका क्या परसेप्शन है? सो 2 different perspectives I will share with you over here, that is very helpful to understand the concept of social justice as well. इनका पूरा का पूरा जो परसेप्शंस हैं जस्टिस को लेकर के और सोशल जस्टिस को लेकर के, फ्रीडम को लेकर के, ये एक थ्योरी है जो कैपेबिलिटी अप्रोच बोला जाता है। कैपेबिलिटी अप्रोच पर बेस्ड है इनका सारा परसेप्शन ऑफ जस्टिस एंड फ्रीडम। हियर इन हिज पर्सपेक्टिव, वन ऑफ द पॉइंट दैट व्हाट इज द आइडिया ऑफ जस्टिस, एक पर्सपेक्टिव इनका है कि जस्टिस का आइडिया क्या है। सी, इन्होंने कहा है elimination of injustice in the area of food, health, education to Dalits, tribals, minorities and women. ये इनका परसेप्शन है। Now you see, real world, reality में क्या हो सकता है? These are the provisions that he incorporated. ये इन्होंने propose किया। ये क्रिटिक हैं, जो जॉन रॉल्स का एक थ्योरी ऑफ जस्टिस है, बहुत बड़े स्कॉलर है जॉन रॉल्स, तो उनको क्रिटिक किया है इन्होंने, और इन्होंने कहा है कि जो रियलिटी में हो सकता है उस पे हमें फोकस करना है। वही इन्होंने कहा है कि जो इनजस्टिस इन द एरिया ऑफ फूड इनजस्टिस, फूड सिक्योरिटी नहीं है, हेल्थ सिक्योरिटी नहीं है, एजुकेशन का प्रोविजन नहीं है, दीज आर द इनजस्टिस ना, इसको इलिमिनेट किया जाए
सोसाइटी से इसको इलिमिनेट किया जाए। And similarly, one of the another perspective that he proposed, what is the right concept of freedom in a democracy? फ्रीडम का क्या कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी में? इन्होंने कहा है फ्रीडम फ्रॉम हंगर, इलिटरेसी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, सोशल ह्यूमिलिएशन एक्सेट्रा, ये दीज आर द एलिमेंट्स। इससे अगर आप आजादी पा लेते हैं, देन दैट इज द रियल कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम इन डेमोक्रेसी। जो 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 एक लाइक फूड इनसिक्योरिटी है, जो हंगर जिसको बोलते हैं, भाई खाना खत्म हो गया, जो भुखमरी बोलते हैं जिसको, भुखमरी है, जो इलिटरेसी है, जो बेपढ़े लिखे लोगों की बहुत बड़ी तादाद है, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, हम सब जानते हैं। तो इन सब से फ्रीडम जब मिलेगा, दैट इज द रियल कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम इन डेमोक्रेसी। तो इन्होंने एक प्रपोज किया जो अहमद सेन ने, आई विल जस्ट कोट इट, ये कोटेशन नहीं है, इनका प्रपोजल है कि सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स SERs सपोर्ट इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रिड्यूस इनइक्वालिटी एंड इनहैंस ह्यूमन कैपेबिलिटीज। ये इनका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो बेस्ड है कैपेबिलिटी अप्रोच पे। ये कहते हैं कि भाई जो रियल सिचुएशन है, जो उसकी कंडीशन है, वो देखिए आप, जो हमारे मतलब लोग हैं, जो हमारे पीपल हैं, उसका क्या कंडीशन है, हाउ मच ही इज कैपेबल, अकॉर्डिंगली उसको आप सोशियो इकोनॉमिक राइट्स प्रोवाइड कराइए। दैट इज बीइंग प्रपोज्ड बाय अहमद सेन। नाउ रोल ऑफ जुडिशियरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, हमने आपको बहुत सारा एग्जाम्पल्स पहले भी दिया है। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट दिए हैं विच इज डायरेक्टली promoting social justice in our society. So one of the very renowned case, landmark judgment है case of Nanda Bharti versus State of Kerala 1973. Although it is not directly related to social justice, but इस case का relevance है in the field of social justice. And otherwise ये case one of the landmark judgment in Indian judiciary. ये हम सबसे recommend करेंगे कि आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। केस ऑफ नंदा भारती इन स्टेट ऑफ केरला 1970, सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे जाइए, आपको मिल जाएगा ये। तो ये जो हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, उस टाइम में गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्ट्स लाए थे विच वर ट्राइंग टू लाइक डिसमेंटल द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर जो एक कॉन्स्टिट्यूशन को होता है वो चेंज नहीं किया जा सकता है। इस लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहोल्ड किया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्ट्रिन है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। एंड सोशल जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज इनएलिजिबल पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस। वन ऑफ द अनदर वेरी लैंडमार्क जजमेंट, ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1980। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, किसी का माइक खुला हुआ है, प्लीज उसको बंद कर लीजिए। यू प्लीज म्यूट योर माइक, किसी का माइक ऑन है। ओके, सो ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1985। इसमें द सुप्रीम कोर्ट हैज रिकॉग्नाइज्ड द राइट टू लिवलीहुड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21, particularly फॉर पेवमेंट dwellers एंड स्लम dwellers। नाउअडेज आप देखिए धारावी, जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम है मुंबई में, धारावी, उसको लाइक उसको रिहेबिलिटेशन कराया जा रहा है उन सबको। दोनों एक लग रही है। किसी का माइक ऑन है, प्लीज आप माइक बंद कर दीजिए प्लीज। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी आर्टिकल 21 में हम लोगों ने डिस्कस किया। मेयरली आप टेक्स्ट को मत पढ़िए। फॉर एग्जाम्पल जो आर्टिकल 21 का टेक्स्ट है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, दैट इज नॉट द एंटायर प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 21. So in the case of Olga Tellis versus Bombay Municipal Corporation, सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिकॉग्नाइज किया। राइट टू लिवलीहुड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो धारावी का जो केस था उसमें भी जो लैक्स ऑफ फैमिलीज उस स्लम में हैं, अगर आप उसको डिस्प्लेस करते हैं तो फिर उनके लिवलीहुड का क्या होगा? बिकॉज दे आर स्टेइंग इन द सिटी, दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग सम लिवलीहुड। वो धारावी स्लम में रहते हैं इसलिए उनको लिवलीहुड मिल रहा है वहां से। लेकिन जब आप मुंबई से बाहर कर देंगे उसको,
तो उसको वो लिवलीहुड कहाँ से मिलेगा? एंड दैट इज व्हाई कोर्ट हैज made this recognition that right to livelihood is an integral part of right to life. Similarly, one of the another landmark is Indira Savane versus Union of India 1992. इसमें जो ओबीसी का रिजर्वेशन था 27%, उसको अपहोल्ड किया गया और द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर इसमें इंट्रोड्यूस किया गया, बिकॉज जो बैकवर्ड क्लास है, अदर बैकवर्ड क्लास है, उनमें भी मेनी फैमिलीज वो थोड़ा ठीक ठाक हैं, तो भाई व्हाई दे शुड गेट द बेनिफिट ऑफ दैट रिजर्वेशन? द कैटेगरी विच इज स्टिल लैगिंग बिहाइंड, जो बिल्कुल अभी तक पिछड़े हैं, उनको मिलना चाहिए रिजर्वेशन का बेनिफिट, उनको मिलना चाहिए। तो एक न्यू जो कॉन्सेप्ट आया, जो इंट्रोड्यूस किया क्रीमी लेयर का, आप सब जानते होंगे जब हम ओबीसी में किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें साथ के साथ एक प्रोविजन होता है कि आपको नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। नॉन क्रीमी लेयर, you are like the right person to be the beneficiary of this reservation. तो इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। एंड वन ऑफ द अदर कॉन्सेप्ट दैट 50% कैप ऑन रिजर्वेशन, एट एनी टाइम 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन सेक्टर। वो जो कैप बनाया गया वो 50%, इंदिरा सवाने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 में ये लाया गया। Similarly, one of the another landmark judgment, विशाखा versus स्टेट ऑफ राजस्थान 1997, जेंडर इक्वेलिटी के लिए इट इज वन ऑफ द लैंडमार्क। इसमें एक वेरी फेमस जो गाइडलाइंस आया, विशाखा गाइडलाइंस, दैट एट द वर्क प्लेस वी आई होप आप बहुत सारे हमारे इसमें पार्टिसिपेंट जो होंगे वो हमारे लाइक फीमेल होंगे, तो आप इसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और हमारे जो मेल्स हैं वो भी इसको समझ सकते हैं वर्क प्लेस पे कितनी दिक्कत होती है। हम सब तो पढ़े लिखे लोग हैं, तो हमारे यहाँ तो ये कल्चर नहीं है, बट आप इसको कोरिलेट कीजिए, सोसाइटी में क्या हो रहा है एवरी डे, व्हाट इज हैपनिंग विद आवर 50% पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो वो जो एक विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान लैंडमार्क जजमेंट है, उसमें पूरा गाइडलाइन आया टू प्रोमोट जेंडर इक्वलिटी एंड लिबर्टी। सिमिलरली ये एक नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में ये एक लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें अच्छा ये बहुत ही नेग्लेक्टेड कम्युनिटी है, आई एम सॉरी टू से, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा ये लोग ऊपर आ रहे हैं। अभी जो LGBTQ, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर प्लस, इनकी जो कम्युनिटी होती है, जिसको हम ट्रांसजेंडर, यूजुअली ट्रांसजेंडर बोलते हैं, थर्ड जेंडर, तो इन पे तो किसी का अटेंशन ही नहीं होता है, कोई नोटिस ही नहीं कर रहा है इनको कि इनकी लाइफस्टाइल क्या है, इनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, इनकी क्या इश्यूज हैं, कोई नहीं बात करता है इस पे। आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये हमारे सोसाइटी की रियलिटी है, दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। बट रिसेंटली आई एम हैप्पी टू शेयर, आप सबने भी सुना होगा, देखा होगा, एक ट्रांसजेंडर किसी कॉलेज में, मैं भूल गया किस प्लेस पे, वो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर बनी है। वो शी हैज कंप्लीटेड हर डॉक्टरेट, PhD वहां से कंप्लीट किया है उन्होंने, और वो उस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे आई है वो। तो ये नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 2018 का लैंडमार्क जजमेंट है, इसमें इनकी डिग्निटी की बात की गई है, इनके पर्सनल लिबर्टी की। और इसमें जो one of the very important judgment that same sex marriage especially for transgenders, तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसकी प्रोविजन को मान्यता दिया है। सो दीज आर सम ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट। इसके अलावा आपको बहुत सारे और भी जजमेंट्स मिल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, जिसने प्लेड अ बिग रोल फॉर द प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस इन आवर सोसाइटी। नाउ अभी क्या है, व्हाट इज द सिचुएशन टुडे, व्हाट आर द चैलेंजेस? आई होप यस आई हैव टाइम, अभी 2-3 मिनट में हम कंक्लूड कर देंगे। प्रोफेसर बीजापुर सर, कैन आई कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 5 minutes? Yes, certainly. Okay. तो व्हाट इज द रियल चैलेंजेस? अभी जो सोशल जस्टिस है उसकी क्या कंडीशन है, रियल वर्ल्ड चैलेंजेस क्या है? सी, the first point that I have mentioned, ये persistent gap between constitutional activism and implementation। जितना भी हम लोगों ने जुडिशियरी के लैंडमार्क जजमेंट डिस्कस किए, जितना भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन डिस्कस किए हम लोगों ने, फंडामेंटल राइट्स डिस्कस किया,
फिर हम लोगों ने DPSPs डिस्कस किया, प्रियम्बल डिस्कस किया, फिर दो राइट्स बेस्ड बहुत सारे जो एक्ट्स आए हैं वो सब हम लोगों ने डिस्कस किया, डिफरेंट प्रोविजंस। नाउ डिस्पाइट ऑल दिस थिंग्स, ये कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है? तो देयर इज अ बिग गैप। जो इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है तो बिग गैप, बहुत गैप है इसमें। प्रोविजंस है हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्पावर किया है हमें, जुडिशियरी ने बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट दिए हैं, बट स्टिल ऑन द ग्राउंड ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, बिग गैप है। दिस इज वन ऑफ द बिग चैलेंज। सेकेंड चैलेंज, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। अब हम लोगों ने उस टाइम में जो प्री एंड पोस्ट कॉलोनियल पीरियड है उसमें डिस्कस किया कि हाउ द कास्ट बेस्ड स्ट्रक्चर वो पूरा सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता था। बट अभी इन 21st सेंचुरी, वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, ये 2025 है, बट एवरी डे लॉट्स ऑफ incidents are happening related to caste based discrimination. I hope आप सबने भी सुना होगा, अभी रिसेंटली few weeks ago यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है इटावा में एक केस आया कि जो कथावाचक होते हैं, जो गीता एंड लाइक रामायण के वर्सेस जो रिसाइट करते हैं ना, कथावाचक, तो एक गांव में, इटावा के एक गांव में, वो यादव कम्युनिटी के जो लोग थे वो रिसाइट कर रहे थे, वो कथावाचक थे। तो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल, प्लीज डोंट माइंड, अगर किसी को हर्ट हो रहा हो तो माइंड मत कीजिए प्लीज, बट दिस इज द रियलिटी। तो वो यादव कम्युनिटी से होने की वजह से, फ्रॉम अ पर्टिकुलर कास्ट, उनको लाइक बंद किया गया, उनको रोका गया, उनको मारा पीटा गया, उनके चोटी के जो बाल काट दिए गए, मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन। लाइक इट सीम्स दैट कथावाचक कैनॉट बी फ्रॉम अदर कास्ट। ये इट इज स्टिल हैपनिंग, ये हो रहा है। और हम बिकॉज हम लोग तो एजुकेशनल सेक्टर से हैं, आई विल कम टू दैट पॉइंट, ये जो ग्रेव कंसर्न है उसमें आएंगे हम अभी। थर्ड जो हमारा रियल वर्ल्ड चैलेंज है वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। आप देखिए अभी क्या हो रहा है इंडिया का, स्पेशली इन इंडिया, दोज हु आर रिच दे आर बिकमिंग रिचर एवरी डे, एंड दोज हु आर पुअर दे आर बिकमिंग पुअरर एंड पुअरर एवरी डे। वो गरीबी होता जा रहा है, उसको कोई चांस ही नहीं मिल रहा, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। जो रिच हैं, जो अमीर हैं, वो डेली अमीर हो रहे हैं। आप, आई विल नॉट गिव यू एग्जांपल्स, देयर आर फ्यू फैमिलीज, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, यू कैन ऐड फ्यू फैमिलीज फर्दर, वही रिच होते चले जा रहे हैं। और जो हमारे गरीब, जो एक बड़ी तादाद है, वर्ल्ड बैंक की अभी रिसेंट रिपोर्ट है ना, एवरी फोर्थ इंडियन आर स्टिल लिविंग इन पॉवर्टी, लाइक 4 in 1, यानी 4 में से एक इंडियन अभी भी पॉवर्टी में जी रहा है। मीन्स अगेन 25%। आप 25% इंडियन को कैलकुलेट कीजिए, कितना पॉपुलेशन है? अराउंड 35 करोड़, विच इज बिगर देन मेनी कंट्रीज पॉपुलेशन, कंट्री के पॉपुलेशन से ज्यादा है। तो ये डिस्पैरिटीज, दिस इज अ रियल वर्ल्ड चैलेंज। सिमिलरली in today's world, digital divide, it's very important because we are from educational fraternity, जो एक अभी पूरा फोकस है डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल दैट थिंग्स, बट जो एक गैप है, those who are living in cities and towns, big towns, those who are capable, they can access those digital technologies easily, उनको easily provide हो रहा है, वो इजीली एक्सेस कर रहे हैं, इजीली यूज कर रहे हैं। बट दोज हु आर फ्रॉम रिमोट लोकेशंस, विलेजेस, गांव में रह रहे हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो एक बड़ी तादाद है, लार्ज नंबर, वो दे आर ऑल लाइक वंचित हैं उससे, उनको नहीं है, वो डिजिटल एक्सेसिबिलिटी नहीं है। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, आई एम सिटिंग इन अ हिली रीजन, ऑल्दो यूनिवर्सिटी है, बट नाउ यू सी मेरा इंटरनेट डिसरप्ट हो रहा है। अब आप बताइए, बट most of you are sitting in UP, Bihar, Jharkhand, like Uttarakhand, maybe from other parts of India. तो आप हर जगह देखिए क्या सिचुएशन है, सिटीज में, टाउन्स में, जो डिजिटल एक्सेसिबिलिटी है, नॉट ओनली इन एजुकेशन, इन ऑल अदर सेक्टर्स ऑल्सो, वो जो लाइक बिग सिटीज एंड टाउन्स के हैं, डोमिनेंट है, उन्हीं को मिल रहा है। जो बेचारे विलेज के हैं, पुअर हैं, उनको नहीं मिल रहा है। सो दैट इज ऑल्सो समहाउ one of the real challenge of social justice. Similarly, social media का destruction, I'm not going to explain it because I am running of time.
ये मुझे जल्दी खत्म करना है। तो सोशल मीडिया का जो एनिहिलेशन है, आप देखिए सोशल मीडिया पे देयर इज नो लाइक एनी लेजिस्लेशन, कुछ रूल ही नहीं है। सोशल मीडिया पे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, स्पेशली इन इंडिया, कंट्रीज लाइक इंडिया, वी डोंट हैव एनी रूल्स एंड रेगुलेशन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एंड एवरी टाइम सोशल मीडिया पे जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, दे आर लाइक टारगेटेड, दे आर लाइक क्या बोलते हैं, टाउंटेड, उस पे उसको टाउंट किया जा रहा है, उसको मिसरिप्रेजेंट किया जा रहा है, उसको जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी, बट देयर इज नो रूल्स एंड रेगुलेशंस। सिमिलरली जेंडर इनइक्वालिटी, स्टिल आप देखिए व्हाट इज द सिचुएशन, एवरीवेयर इट इज फ्लैग्रेंट। Now the last one which I have included, this is not the exhaustive, इसके अलावा भी बहुत सारे challenges है। The last one, rising intolerance and exclusionary politics, very dangerous to our society. What is happening? अभी आप देखिए जो hate speeches every day, उसमें our executives, our legislator, everyone is involved, सब उसमें आ रहे हैं। I'm not going to explain further, you are all aware of it. I'm coming to the last point of my challenges over here. Grave concern. What is the grave concern? Because we are all from educational fraternity. So what we see, that various reports highlight that SC/ST students are consistently facing discrimination in higher education institutions such as IITs, NITs, IIMs, medical science. वो continuously उनके साथ discrimination हो रहा है। रोहित वेमुला, इट वाज अ वेरी फेमस केस, सुसाइड किया उसने एससी कम्युनिटी से। सिमिलरली मेनी अदर SC/ST स्टूडेंट्स, दे हैव शेयर्ड देयर स्टोरीज। इंस्टीट्यूशंस लाइक IITs, अब आप इमेजिन कीजिए जो हमारे कंट्री का टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस होता है, उसमें IIT जाते हैं, NIT जाते हैं, IIMs आते हैं, उसमें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। नॉट ओनली स्टूडेंट्स, टीचर्स भी systematically they are creating discriminations among the students. That's why UGC has recently given notification to many institutions regarding the non-compliance of anti-ragging policies. अभी UGC ने notification लिया है बहुत सारे institutions को, many IITs, and unfortunately AMU भी है। AMU has also got the notice for the non-compliance of anti-ragging policies. Anyway, so these are the real challenges. Now, modern day crusader, what we can do as an educator, what is our role? हमारा क्या काम है, हम क्या कर सकते हैं? So we can create inclusive and equitable classroom. Because see, I'll give you one example, then I'll conclude it. I'm teaching in an institution which is located in Northeast India. तो हमारे यहाँ when you enter any classroom, single classroom में आपको student from all the 7-8 states of Northeast, 7-8 state के student मिल जाएंगे एक classroom में. Now, it is the role of teachers to create inclusive and equitable classroom. This is one of our biggest role. Second thing, encouraging critical thinking and action. हमें एक environment बनाना है जिसमें उन issues के बारे में हमारे students सोचे, what they can do, क्या कर सकते हैं वो, critically they have to think. Similarly, incorporating the values of social justice in the curriculum. जो curriculum होता है, हमारा syllabus बनता है, हम सब syllabus को revise करते रहते हैं, तो उसमें कैसे social justice के values को हमें incorporate करना है, वो that is our role. Similarly, addressing specific issues such as gender equality, caste biases, socio-economic inequalities. क्लास लेक्चर में सिर्फ हमें टॉपिक पे ही बात नहीं करनी है, समटाइम जेंडर इक्वलिटी की बात करनी है, कास्ट बाइस की बात करनी है, सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, दैट एज एन एजुकेटर हम लोग इस पे बात कर सकते हैं. एंड आई वेलकम एंड अप्रिशिएट द स्टेप ऑफ यूजीसी ने अभी like 1.5 years ago 7 days compulsory orientation and induction for all the newly enrolled student के लिए compulsory किया है इसको for all the institution. UGC ने ये एक provision बनाया है कि 7 days का orientation and induction program होगा student के लिए. I hope आप सब लोग करते होंगे, otherwise please इसको आप UGC के guidelines के मुताबिक आप अपने institution में start कीजिए. जो हमारे यहाँ न्यू स्टूडेंट्स आते हैं उसको ओरिएंट करना है,
उसको बहुत सारी बातें बतानी है। उसमें एक एजेंडा है, बिकॉज आई हैव डिलीवर्ड अ लेक्चर ओवर दैट एजेंडा, इंक्लूसिविटी एंड डाइवर्सिटी। स्टूडेंट को ये बात बताना है ओरिएंटेशन में कि कैसे हम डाइवर्स होते हुए भी इंक्लूजन को प्रमोट करेंगे। तो आई अप्रिशिएट द step of UGC for this noble cause. Now finally, be a role model, especially by supporting students from marginalized background. जो marginalized background के students आते हैं उनको थोड़ा assist करना है, उनको थोड़ा favor नहीं देना है, उनको assist करना है, उनका क्या problems है उनको specially थोड़ा support करना है। So these are our roles through which we can promote social justice in our society. Finally, this is my last slide, what we learned. So जो key takeaway है, Constitution empowers the downtrodden, underprivileged and marginalized section of the society, but the real agents lies among the educators to inculcate the practical values of social justice in the words and deeds of the future nation builders, the students. Now, with this, I'm going to close my lecture, although because of disruption, I am running off my time. So with this closing remark, I'm going to stop my lecture. As stated by Martin Luther King Jr. इनका कोटेशन है ये, injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Thank you very much. So I have concluded my portion. Now Thank you, sir. Thank you, Thank you, Dr. thank you. Nazeer. Thank you, Dr. Nazeer Hussain. ये जो Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। ये टाइम थोड़ा एक्सीड Thank you, गया है, sir. एक 5 मिनट हम क्वेश्चन आंसर्स के लिए दे सकते हैं। Thank you, Yes, sir. yes. जैसा इन्होंने कहा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर Thank you, sir. इनजस्टिस एनीवेयर, Hello, thank you, sir. Thank you very much. थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। ये स्टेटमेंट मार्टिन लूथर ने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था, आईएलओ का कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था, इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। यानी इनजस्टिस इतनी भी नहीं होनी चाहिए, जैसा हमारे अडानी साहब हैं, उनका वेल्थ, उनका जो टोटल वेल्थ है, उस वेल्थ से 4 नेपाल खरीद सकते हैं। वो 4 नेपाल, जो नेपाल की जीडीपी है उसके 4 गुना वेल्थ एक आदमी, इंडिया के एक आदमी के पास है। और आपको जैसा सरकार कहती है 80% पॉपुलेशन राशन पे जिंदा है। 80% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 80 और 75% आर सर्वाइविंग ऑन राशन। Yes, yes. गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, इस गैप को अगर रिड्यूस करेंगे तो सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस अपने आप आएगी। अब हम कुछ क्वेश्चंस आपसे लेते हैं। सर मेरा नाम नीतू जायसवाल है सर। हाँ जी, पूछिए। सर ने जैसे बताया कि हम स्टूडेंट के लिए एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम कर सकते हैं यूजीसी के लिस्टेड के हिसाब से। सर उसमें हमने आपने बताया डिस्क्रिमिनेशंस और हमें रखना होगा कि उन्हें क्या क्या सिखाना है। हम उसमें उनको जैसे कि कोर्स के बारे में सिखाना है या डाइवर्सिफिकेशन के बारे में ज्यादा फोकस करना है सर? देखिए, डाइवर्सिटी, रिस्पेक्टिंग राइट्स, एक इसका एक्चुअल आइडिया है सेंसिटाइजेशन। यू हैव टू सेंसिटाइज स्टूडेंट्स कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज क्या हैं और हमारे प्रैक्टिसेस क्या हैं। इनफैक्ट यू कैन आल्सो हैव ए 1 डे वर्कशॉप, जैसा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है दिल्ली में। अगर आप अपनी कॉलेज की तरफ से एक एप्लीकेशन उनको भेजते हैं, एप्लीकेशन इज अवेलेबल फॉर वर्कशॉप ऑन द वेबसाइट ऑफ NHRC। अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो आपको 75,000 रुपये मिलेंगे। 1 या 2 दिन का वर्कशॉप कीजिए, स्टूडेंट को अवेयरनेस लाइए, सेंसिटाइज कीजिए, मेक द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट, पीपल फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, वुमेन, OBCs, जिनके साथ सदियों से डिस्क्रिमिनेशन होता आया है। सिलेबस पढ़ाना अलग चीज है और सेंसिटाइज करना कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज से। आप स्पेशली साइंस के टीचर्स
हम एक 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 प्रोविजन आया था कि साइंस के स्टूडेंट्स को कंपल्सरीली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ानी चाहिए, क्योंकि साइंस वाले पढ़ते नहीं है ना, साइंस वालों को आइडिया नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है। हाँ बिल्कुल सर, जैसे एनईपी ने किया है कि साइंस वाले को भी एक आर्ट सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। जरूर है, जरूरी है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, क्योंकि जब जिस समाज में आप रह रहे हैं, जिस स्टेट में रहे हैं, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन ही आपको नहीं पता है, आपकी स्थिति क्या है, आपका स्टैंडिंग क्या है, आप किस आपका रिकॉग्निशन क्या है। अब जैसा बिहार में इलेक्टोरल रोल्स का रिवीजन हो रहा है, कहा कि साहब ये कागज दिखाइए, वो कागज दिखाइए, फलां दिखाइए, डेट ऑफ बर्थ, आपके पेरेंट कब मरे थे, कब पैदा हुए थे। अच्छा, मोदी जी अपनी डिग्री नहीं दिखा रहे हैं। कैन यू अंडरस्टैंड? वो तो डीयू से पास है, आपको पता ही है सर। ना वो डीयू से जो पास हुए हैं उस डिग्री में वो कंप्यूटर जनरेटेड डिग्री है। ऐसे ऐसे फॉन्ट्स हैं उसमें जो 1979 में वो फॉन्ट अभी इजाद नहीं हुए थे। हैंड रिटन डिग्री है, मेरे पास भी एमए की डिग्री हैंड रिटन है। गुजरात से आके अब डीयू में क्यों पढ़ना चाहते थे, तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। Doesn't matter, that's a different thing. जस्ट एज ए रेफरेंस, जस्ट एन एग्जांपल हमने आपको जस्ट बताया कि